how will they able to see each other's portfolio? Yeah, if I want to see someone else, then how? Okay, let me show. Can you see my screen? No. No. Wait, let me try again. Entire screen share. Just let me know once you can. Yeah, yeah, it's Now. seen. Yeah, can be seen. Okay. So this was the sheet where everybody filled their name and Gmail ID. Okay. Okay. Yeah. For example, you want to see mine. So Hmm. this is me. Okay, and this is the link. So you just need to click on this or just hover your cursor over this. It'll take you to Okay. my Okay. portfolio. Right now, I have not built it. Uh, so maybe by end of day tomorrow, it will be done. So you can see each and everyone's portfolio like this. So only you have access to edit access to your sheet, whereas all of us have view only access to others' portfolio, so that we don't disturb their sheet. Yeah, right. Okay. The previous sheet which you showed, that this one, uh, this link maybe once again, if we can get it. Yeah, I'll share. Basically, this is the master sheet where we'll have all those ranking, how much is all of us invested, what is our absolute profit loss, Hmm. what is the current value of our investment. Say we invested 50 lakhs, currently it's 49.5. So this is the Yeah. current value. So whatever is the percentage, half half percent plus, 1% minus, like that. And this is return of capital. Say you have only utilized funds up to 50 lakh, but your 50 lakhs is lying idle, right? Huh. So like in real life, if you're not using funds, but you are supposed to also see return on capital, Yeah. your ROI would be good, but maybe there are funds lying So idle. this data will be auto populated, or we have to? No, no, this will be, we have these links. I Huh. will, once everyone fills in, because I know right now people will start populating, they might uh, disturb sales, etc. So once they fill, say for example, this is where I invested, this is ROI, Uh-huh. right, and this is alpha. I'll pull all these cells over here for Okay. by Okay. each link. Okay. So this Uh, will be all automated. okay. My second question was on how to make use of that rebalancing. You had said something that explain. Huh. So we can discuss actually, maybe all others who are not yet Okay. Okay. joined, Fine. We'll wait for that. they will have Yeah. common And question. my one more suggestion. Mohit, sorry. Hello. I had one more suggestion. I don't know whether it can be implemented or not. We are making an entry on the Friday closing basis. Correct. Okay, but I have to exit in between of the week. I have set target. Say I have 5%, 6%, or target. So I Hmm. will not take a new entry in between of the week, but exit in between of a week. Whether it could be can be done. Uh, I mean, ideally, that's how we do it in real life. But Yes. the challenge over here is to lock your portfolio. See, usually we all tend to do weekend analysis, and on Monday we exit and rebalance a lot of things. Generally, I mean, generally Yeah. speaking. Mm-hmm. Of course, there are GTT orders in real life, but the challenge over here is, say, for example, I have a stock, and say, let's say this one BHEL. This has given me negative return, and I want to remove this, or let's say this hit my stop loss in between the week. Mm-hmm. I want to remove this.
and replace within the week with some other one. But the challenge then here would be there is a there's a column called auditor. Okay, sorry. This person is supposed to say, for example, Sunil sir, for you, Mr. Anand Daga is your auditor. Now Mr. Anand Daga's job is to make sure you are not manipulating your portfolio within the week. I mean, Yeah. see, Yes. you got my idea, right? Because Yes. 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 someone is losing, and then all of a sudden on Friday he says, "मैंने तो ये डाला था," so his number is bumped up. Yeah. Correct. Yeah. The Tracking only purpose it is difficulty. Yeah. because if I start allowing each and everyone to change their portfolio, I mean, of course, this is investing. Investing is long term. Hmm. You 1 or 2 days here and days plus minus, and that too a percentage of a stock is a percentage of a certain section of 1 CR, right? So Yeah. not be a major impact to the overall ROI. The only control mechanism is to have people only move things on weekend, so that on when auditor himself has made his adjustment, he just take a snapshot. Okay, this person's snapshot is this, and next week he just reviews. Okay, the there is a consistency between what was there now and earlier. It's Okay. not like कुछ 10% डाउन था और उसने थर्सडे नाइट को जाके बोला टॉप गेनर ये मैंने लिया था और शो कर रहा है ऐसा. Then the whole concept, I mean, it's all virtual, right? I don't expect anyone Yes. to, but you just don't know. People are. Okay. But you can close the access from like Sunday midnight like that. We can do that, but then again the job for me increases. Example, ऋषि जैसे कि अभी प्रियम सर ने बना दिया, right? This is his portfolio. Let me open. Now he says he's done. I need to discuss with him because he should ideally start with zero, not minus 2K. Okay, because his average price should be now 1168, not 1170, right? Because we are all starting. He would not like to start on a negative note, right? Some figures were not accurately matching with the trading view prices. So anyway, I just put the round numbers. No worries, sir. You just copy this and just Yeah, put yeah, it yeah. Okay, yeah, there. yeah. Yeah. So because we all want to start at the same Mhm. mark. It's just a game after all, but yeah. So the thing is, if I want to remove access, अभी सर के लिए Sunday तक, I have to only give him new access. So then I have to go like 50 portfolio every week, and then Okay. I thought you could do some automatic like access only until Sunday midnight. nah. So because these are individual sheets, had I had like 50 sheets over here running in one Google sheet, like 50 tabs, then people would have if you give them access, edit So access, they could then destroy it all. the speed of access will be restricted. No, it will be Yeah, the sheet would become heavy yeah, yeah. because too much Google data fetch. Plus, Mm, for example, I mistakenly deleted something in your sheet, so by tab we cannot restrict access. mm. So that's the challenge. So that's why that rule is there. MK sir, good afternoon. Good afternoon. Just I want to ask a question. Just we have to select the stock from the stocks we have given the list. Okay. We have to enter the LTP price also, or it will display automatically. Yeah, I mean, I wanted to discuss this. अभी 5 मिनट है actually. People might still be joining. तो मैं Yes. एक बार सारा starting से बता दूंगा, ओके ओके ओके, नो इशू नो है ना? इशू, हाँ Because नहीं तो वो repeat बराबर करना है, पड़ेगा. कंफ्यूजन थोड़ा सा है तो स्टार्टिंग में हाँ हाँ, बताएंगे. don't worry. We'll Mohit, discuss. as a universe, we'll be talking about Nifty 500, right? So kind of yes. So if you see here, we have Nifty 50, Nifty 50, 150, mid cap 150.
So around 250, which consists of large and mid, and then small cap 250 के जितने भी stocks हैं, वो सारे हैं. So essentially we have a universe of 500 stock. Beyond this, anyways, generally आप भी अपने portfolio में नहीं रखने चाहोगे, right? Like in real life, until unless you really think it's a micro cap is going to just go Yeah, 10x yeah. in No, I'm case. just asking you for example. I mean, we also have the Nifty, say, the apna small cap 750 wala segment, हाँ. uh, or small cap 250 segment, which is separate. So, I mean, just when we are scanning or analyzing our stocks, should we be doing that or not? I mean, for the activity purpose. I Uh, mean, if you have taken particular indices or particular sector kind of logic, so accordingly only we will also try and filter it out, or we will also try and manage it within that universe. I mean, just to be more clear about it. Because yeah, my I understanding was also the same that it should not be a micro cap, but I can choose a small cap that does not feature in this sheet, which I have yes, actually done. yes. So you're free to choose. It's just that वो see what the problem with micro cap is वो daily upper circuit upper circuit upper circuit upper circuit लगेगा अगर operator stock है नहीं और नहीं नहीं daily micro cap नहीं. It is defined as small cap under NSE, but it is not in the Nifty small cap 250. then As you can take it. My reason of only not excluding micro cap was the only reason of like in real life also you sometimes get stuck in correct. operator stocks etc. Absolutely. So I'm not talking about micro caps. They are defined as small caps, but they're not in the Nifty small cap 250 list. They are in the Nifty small cap 750 list, let's say. So usme se I can choose. I actually have those stocks in my portfolio and they're doing well. Okay, yeah, then you can choose, no worries. Okay, great. Yeah. Mohit, I Okay. also had a couple of other questions. So, for example, because this is gamification, I would assume that we are not going to take into account any dividend received on the shares that we hold. So, for example, I buy a share today, I hold it for let's say 6 months, and in this 6 months, it declares dividends and it gets paid out. I am not going to count those that amount received as dividend, right? Wrong. Yeah, right now I've not added dividend return. So in the rules, when you specify it, I'm absolutely fine with it because it's a game that we are playing. It's an role play of sorts, not real ones. If you want to do it real, you can, but it's a good thing that we're not going to count dividends. The Yeah, second that's a good would call out. be yeah, the second would be when I'm actually placing orders, even for cash and carry long term shares. I put a GTT order because I have a DDPI with Zerodha, the direct debit Hmm. instruction, pledge instruction given. I don't have to put an OTP. So let's say it happened a couple of months back. All of us know it happened with the Adani Group, enterprises, ports, and whatnot. It had lower circuits continuously for 4 days. I Hmm. don't want to wait for the end of the week to figure out my portfolio has been, drawn down by 60% before I take a decision to cut. When I place an order, by default, I place a minus 5% on the last traded price GTT. If it Uh, reaches that in the first 1 week, I sell it off. How do you account for that? Otherwise, for stocks that yeah, I I mean, actually will get out of, yeah. See, I mean, this is the same question that I think Sunil sir also asked raised that can we do adjustments within the week? Okay. no, 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 Uh, no adjustment allowed. So what I was suggesting and what I actually do is this: I set a GTT order, good till triggered, okay, huh. and I set a stop loss there, and I define that stop loss in the Yeah, column yeah. besides where I'm GTD putting. will trigger within the week only. No, if the threshold is breached. Correct. So if it hits the GTT price, that's my sale price for that Correct. instrument. So again, it goes within the week only if saying the condition is met. Now, I'll see my point, my take on, let's say, Adani is okay. So this is a portfolio. Each of you, when you receive a portfolio sheet, it looks something like this. Okay. This is a real portfolio created, I think, 1.5 or 2 years back for someone. And after I taught him something or we discussed something, the person took it from me and they say, okay, now I can manage on my own. Thank you very much. Hmm. Now, this was left as is. I did not, beyond a certain point, 3 or 4 months of hand holding, this was a family relation, okay? Hmm. The person is managing his on his own. But I left this sheet as is. So when it came to the point that, okay, now we're going to start this investing challenge, I came here and saw, okay,
Had this person not do anything, okay, just left that day when I stopped the hand holding, from that day till today, what would have happened to his portfolio? There were cases where it went through Adani saga. There are cases like BHEL. There are small caps who beaten down, and then there are mass dogs who's gone like 30x, right? Mass dog like not 30x. I mean almost from 398 to, yeah, around 6x something. It has gone 300%. So now if you see, this is a real case I'm talking about, not making something. These are not random numbers. This was a real portfolio. So this was the misted amount. If you still see Nifty as of, I mean, we started on this date, entry date, and it's like more than a year and a half. Nifty has given 10.77. The portfolio, which was after 3-4 months of hand holding, was just left as is, generated 25%. So there is an alpha of 14 good percent. And this was the same method we were doing, that we see what has happened over, because the person is also office going, no time to do analysis and stuff, just rely on some method and some something to find, okay, yeah, 10 may say I need to remove this 2 on Monday and add this 2 or these 3 on Monday. Okay, that's how a very busy person would do actually in real life, who's not looking at the screen charts day in and day out, who's relying more on a quantitative data rather than a discretionary, acha isme cup and handle hai and all that. Still, the portfolio is able to generate alpha if I had just left over. Now, coming to the fact and saying, okay, what happened? मैंने तो GTT order है, it should have been triggered on Thursday, and but our challenge does not account for that. I I mean, in a bull market, that doesn't really matter. Yes, if it is a bear market, and had it been a case where risk management was very critical to was a big enough critical factor, which have, abhi to bull market mein things went really good, but in a bear market the situation would have been opposite. Then yes, your statement in that uh, context would be very apt. Being it a Cool. game, yeah, being it a game, I'm assuming, okay, India, it can again turn out to be a bear market. I just don't know what happens starting Monday, and tons of negative news shared yesterday by me. So No, Mohit, that's absolutely fine. My only reason was to clarify it from the perspective of the game. So we will not take GTT into account. We will no still take the LTP of Friday closing. Friday closing. So Okay, so as these long are as all that's the Friday. rule, that's the rule. That's absolutely fine. No worries. Yeah, that's why, I mean, we need to have an audit checking someone. Okay, these were the Right, questions. I also that had is one good because what request. happened, MKG, that otherwise the people who are going to offices now, they cannot manage daily. It is good Yes. that only Friday Absolutely. we So have to do. Friday closing is, and everyone making thinking, What Vaibhavji is telling, then we have to do it daily exercise. It is like that. हाँ वो No, 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 it's practical not going to be possible. a daily exercise. See, मैं भी जीटीटी लगा के भूल जाता हूँ. मैं रोज अपना पोर्टफोलियो नहीं देखता. हाँ सो हाँ जब जीटीटी ट्रिगर होगा वो हो जाएगा. मुझे वीकेंड पे ही पता चलेगा कि अच्छा इसको. वैभव जी आपकी बात सही है, बट वो फिर इस सीट में मैनेज करने के लिए वी हैव टू प्ले डेली. हाँ, नहीं नहीं, मैं व्हाट समझ गया. व्हाट इसलिए यू तो आर मैं सेइंग. मान गया कि मैं कह रहा हूँ अच्छा ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस गेम आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट. एज लॉन्ग एज इट्स द रूल, दिट्स द रूल. हम सब उस अकॉर्डिंगली खेलेंगे. एक रिक्वेस्ट और थी मोहित, जब हम अपने पोर्टफोलियो शीट में जाते हैं ना, जहां प्राइस वाला कॉलम है, it only shows the rounded off figure. Is it possible to include the decimals in it as well? So that when we यहाँ put पे the average price, हाँ, average price जब हम डालें, वो जैसे for example, maybe it is not that applicable for mid cap, large cap stocks, but when हाँ we come to small caps, a few paisa difference
makes a lot of difference. There are some stocks that could be, 30 rupees, 40 rupees, 100 rupees also. It moves maybe 1 rupee, 50 paisa or something in a day. So नहीं वैभव जी मैंने ये करके देखा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज राउंडेड है बट वो लेता एक्चुअल फिगर है जब लेता पूरा कंपेयर है, करता है हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस। तो Correct. आप अपना प्राइस जो डालेंगे ना वो आप एग्जैक्ट डालिएगा तो वो हाँ। लेगा, मतलब लास्ट मैं ट्रेडेड वही प्राइस अरे मैं वही कह रहा हूँ, वो मेरे शीट में कम से कम लॉक्ड है, जहां पे मैं फॉर्मेट चेंज करके उसको डेसिमल नहीं दिखा पा रहा। वो लॉक्ड है। So, नहीं सबके में लॉक है लेकिन वो एक्चुअल फिगर ले रहा है, फिगर वो एक्चुअली ले रहा है। आप अरे मैं पहले एलटीपी की बात नहीं कर रहा, मैं एलटीपी की बात नहीं कर रहा। हाँ, ये एवरेज वाला जो कॉलम है ना, जहां पे मैं अपना प्राइस एंटर करूंगा, हाँ। इसको मैं चाहता हूँ कि ये डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाए फॉर बोथ स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। ये आपके लिए जहां मैं लॉक्ड है? एंटर ये सही है, करूंगा। ये सही है। नहीं वैभव जी, ये लॉक्ड है क्या आपके लिए? हाँ, मेरे को नहीं, फॉर्मेट चेंज करने नहीं दे रहा मुझे। मैं पूरी शीट में फॉर्मेट नहीं चेंज कर पा रहा। अगर मैं किसी को फाइनेंशियल में चेंज करना चाहूँ या डेसिमल पॉइंट डालना चाहूँ, वो भी नहीं अलाउ कर रहा। नहीं बट ये तो करने देना चाहिए आपको। अच्छा, एक पता बार नहीं, ट्राई करिए, अभी आप हो तो हम अभी ट्राई कर सकते हैं। मैं अभी ट्राई जैसे करता हूँ। जैसे देखिए प्रियम सर ने किया है, उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया, उनके डेसिमल्स है यहाँ पे। ओके, मैं एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ अगर मोहित जी डालता है नहीं तो। करने दे रहा, वो बात सही बोल रहे हैं, वो राउंडेड ऑफ ही ले रहा है उसको, हमारे में भी नहीं करने दे रहा है। नहीं, मैं डेसिमल पे एंटर नहीं करने दे रहा मोहित मेरे को। नहीं करने दे रहा, एवरेज प्राइस आप में भी अगर नहीं करने दे ड्रैग रहा। डाउन करके उसको मतलब कर दो तो, इफ इट इज पॉसिबल, आई डोंट यू हैव टू डू इट 50 टाइम्स इन हाँ 50 शीट्स, इज द रीजन आई एम नहीं नॉट नहीं इंसिस्टिंग नहीं नहीं, करो। डेसिमल्स तो होना चाहिए। सो फॉर्मेट नंबर। But Mohit, wouldn't the average price be also the last traded price of Friday? Man, why do we need to input it? अभी तो पोर्टफोलियो स्टार्ट कर रहे हैं, सो इट विल बी द लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ फ्राइडे। Yeah. बट उनका क्वेश्चन ये था कि वो डेसिमल नहीं डाल पा रहे हैं। नहीं, my thought was just that कि अगर अपना we just put the entry date, right? So I mean, can we just not configure it to take the last traded price of example? Supposedly now this on the Friday we are creating the portfolio, right? तो अपना हाँ जो फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस होगा वही अपना एवरेज प्राइस हो गया ना, मतलब वी आर नॉट राइट नाउ हियर पिरामिडिंग और एनीथिंग लाइक दैट लॉजिकली। करेक्ट करेक्ट, तो हमको तो वही लेना है। दैट पॉइंट इज आल्सो राइट। फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टॉक ले लेता हूँ, लेट्स से एमएनएम। मैं इसमें जाता हूँ अपनी शीट में। ओके, ये एमएनएम, तो यहाँ इसका ये आ गया, इसका डेसिमल ये आ गया विद डेसिमल। सो आई एम एंटरिंग विद दिस प्राइस। ओह, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। वैभव जी वो हो रहा है, आप ऊपर से जाके ना वो फॉर्मेटिंग चेंज कर दीजिए, अलग से नहीं, पहले यू विल गो टू द अप सेक्शन, चेंज इट एट 2 डेसिमल प्लेसेस, देन एंटर, देन इट विल टेक। हाँ वैभव जी, अभी ट्राई किए, वैसे भी मैंने ये किया है, नंबर किया है हाँ आपके हाँ इसको। हाँ, नहीं नहीं, वो क्या है ना, आपको आप अपने आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ऊपर जाके डेसिमल में करके, देन यू विल एंटर, देन इट विल टेक। अब मेरे वाले में अब करने दे रहा है, मैंने एंटर करके देखा था कि मोहित माय ओके प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ओके ओके। कराओ तो यार। So do we have everyone now? यस, एक क्वेश्चन था मेरा, ये एवरेज क्वांटिटी डालने की जरूरत नहीं है ना, समथिंग दैट पूरब जी आस्क्ड अर्लियर। एवरेज क्वांटिटी, हाँ, ये एवरेज वाले कॉलम में कुछ डालने की अभी जरूरत नहीं है। एवरेज इज योर एंट्री प्राइस, आपको डालना है ये। जैसे कि अभी एलटीपी डालेंगे सर, फर्स्ट टाइम एलटीपी डालेंगे आप, उसके हाँ बाद फर्स्ट टाइम में एलटीपी एलटीपी डालेंगे। वाले कॉलम को कॉपी करके एवरेज वाले कॉलम में डालना है, अच्छा, सिंपल। एलटीपी कॉपी करके डाल। बट मेक श्योर ओनली यू कॉपी वैल्यूज, डोंट कॉपी हाँ, copy as values only, not The formula. the LTV price and trading view price does not match. और ठीक है, चलेगा सर, कोई बात। थोड़ा वो कभी कभी लास्ट मिनट 30 मिनट का एवरेज भी होता है ना सर, तो उस वजह से भी ऊपर नीचे होता है। और गूगल फाइनेंस और ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा नहीं होगा, दैट इज ओके। एनीवेज one हमारा more. कंपटीशन इज रनिंग ऑन गूगल फाइनेंस प्राइसेस ओनली, तो देयर इज अ वन बेस रेफरेंस। Okay. ओके, तो आई थिंक वी हैव एवरीवन। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जस्ट फॉर एवरीवनस अंडरस्टैंडिंग। सो एवरीवन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फिलिंग दिस शीट, जहाँ पे आपने नेम एंड ये ईमेल आईडी डाला है। आपके ईमेल आईडी पे ये लिंक ऑलरेडी आ गया होगा,
right? For your each individual portfolio link. आपको अगर नहीं आया तो आप ये मेन शीट का भी मैं लिंक जो है ग्रुप में दोबारा से शेयर कर दूंगा। इसके थ्रू भी आप अपना पोर्टफोलियो में जाके एडिट कर सकते हो। और अगर आपको देखना है, लाइक कल शाम को देखना है कि वैभव जी ने क्या भरा है या अंकित ने क्या भरा है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। एंड यू विल ओनली हैव व्यू ओनली एक्सेस। आप उनकी शीट एडिट नहीं कर सकते हो, पर आराम से कभी भी दिल करे खोल के देख सकते हो कि वो लोग कर क्या रहे हैं विथ थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन। नाउ टेकिंग एग्जांपल ऑफ प्रियम जी शीट, उन्होंने भर दिया अच्छे से आज। तो ये एडिशनल एक्टिविटीज की उन्होंने, तो दिस इज अप टू यू, आपको कुछ भी फर्दर एनालिसिस करनी है कर सकते हैं। एंड रियली लाइक हाउ इज ऑर्गेनाइजिंग एंड थिंकिंग ऑलरेडी। सो उन्होंने बेसिकली क्या किया है, यहाँ से आप सबको यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी 150 एंड आगे के मिड कैप के स्टॉक्स है, और यहाँ पे सारे स्मॉल कैप्स एटलीस्ट 250 तक स्टॉक्स है। 250 के भी आगे आप जा सकते हैं, बट आप देखिएगा कोई ऐसे ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक, माइक्रो कैप स्टॉक जिसमें रोज अपर सर्किट डाउन सर्किट लग रहा है, वो मत चूज करिए, नहीं तो क्योंकि वो रियल भी नहीं होगा, राइट? तो उसको आप इग्नोर करिए। 500 स्टॉक्स तो मैंने यहाँ दे दिए हैं सिंबल के साथ में। अब आपको, ताकि सिंबल क्या है उसका कोई चैलेंज ना हो कि गूगल फाइनेंस किस सिंबल से रीड कर रहे हैं, आप यहीं से पिक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है सिंबल क्या है, आपका कोई स्टॉक है, जस्ट रैंडम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप जैसे रियल एस्टेट में है लोधा गूगल फाइनेंस, आप यहाँ ऐसे करके सर्च कर लीजिए, ये मैक्रोटेक डेवलपर्स, उसका सिंबल है लोधा, एनएससी लोधा। तो इसमें आप इस पे क्लिक करिए। जस्ट इन केस आपको सिंबल नहीं पता है तो आपको ये एनएससी के बाद जो ये स्पेस के बाद जो है ना, यही सिर्फ सिंबल है, आपको सिर्फ इतना डालना है। जैसे मैं इसको कॉपी किया, मैं अपनी बोली पोर्टफोलियो शीट में गया, आपने यहाँ जाके बस इतना डालना है, लोधा। ठीक है, तो ये उसका प्राइस आ गया। एज ऑफ फ्राइडे क्या प्राइस है, क्वांटिटी कितनी रखनी है आपको, वो आपको 1 CR का फंड है, कितने स्टॉक रखने हैं, तो जी आपका आवाज कट गया लग रहा हेलो, Mohit, we can't hear you. कैन यू हियर मी? Now we can. ओके, आई थिंक म्यूट प्रेस हो गया था गलती से। तो आई वाज सेइंग वी स्टार्टिंग विद 1 CR, एंड आपको कोई भी कैश, आपको कोई भी एफएनओ नहीं यूज करना है, कॉल पुट एक्सेट्रा किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का, ओनली कैश स्टॉक्स जो हमने यहाँ पे लिस्ट में है, और उसके ऊपर आपको कोई अगर ठीक लग रहा है स्टॉक, until as far as it is not a micro cap, and maximum allocation of funds that you can do in large and small cap, large and mid cap is 70%, and 30% in small cap. Like generally you will not have very risky exposure. I mean, we're just putting some rules around like how you will do it in real life. आप वीकली संडे को रीबैलेंस कर सकते हैं, सैटरडे संडे को, बट जो भी आप एंट्री करेंगे उसको फ्राइडे की लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो गूगल फाइनेंस पे आ रही है उसी पे ही आप एंट्री करेंगे। जो भी आप एग्जिट भी करेंगे तो वो भी प्रॉफिट लॉस जितना भी होगा वो फ्राइडे की लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे एग्जिट करेंगे। तो दिस रूल रिमेन सेम फॉर एवरीवन। कोई भी बीच में स्टॉक को विद इन द वीक कुछ भी प्राइस थी उस पे नहीं करेगा। that's the also a reason कि हमने यहाँ पे ऑडिटर लिया है जी। द ऑडिटर जॉब इज टू, फॉर एग्जांपल मैं हूँ ऑडिटर फॉर हिरेन जी, ठीक है? हिरेन मेरा माय ओनली जॉब इज टू मेक श्योर हिरेन जी ने जो संडे को पोर्टफोलियो बनाया है, मैं उसको एक स्क्रीनशॉट लेके कहीं साइड में अपनी टैब में रख लूंगा, एंड आई जस्ट फ्राइडे को या सैटरडे को देख लूंगा कि हाँ इन्होंने विद इन द वीक में कुछ चेंज नहीं किया। नहीं तो क्या होगा कि लेट्स से उनका कोई स्टॉक बहुत नीचे था, जस्ट रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई स्टॉक बहुत नीचे था, उन्होंने फ्राइडे को जाके चेंज कर दिया,
टॉप गेनर कोई डाल दिया या टॉप 5th पोजीशन डाल दिया, तो उनका नंबर्स जो है आरओआई का वो इन्फ्लेटेड हो जाएगा, राइट? दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ हैविंग ऑडिटर. थोड़ा सा कंट्रोल मैकेनिज्म, दिस इज जस्ट अ गेम, देयर इज नो पुलिसगिरी टू बी डन. दैट्स द ओनली रीजन. कमिंग टू बैक टू द रूल्स, सो फ्राइडे का प्राइस यूज करके वीकेंड ओनली एडजस्टमेंट्स है, सो दैट this thing doesn't really impacts your real trading, your office job, etc. It's just a long term investment जिसको आप वीकेंड पे जनरली जैसे आप स्टॉक एनालाइज करते हो, चाहे आप ट्विटर देखते हो, न्यूज देखते हो, मैगजीन पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी आपका सोर्स है या टूल है, खुद का कोई इंडिकेटर है या कोई इन्वेस्टिंग मॉडल है या कोई म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन देख रहे हो, you can use anything, but the only thing is that you do this on a weekend and use the Friday closing prices to have a very simple rule. इसमें हमने आपने शायद जब लेट कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया होगा तो हमने डिस्कस किया, इसमें डिविडेंड्स वगैरह वो इंक्लूडेड नहीं है. तो दिस अ कॉमन रूल. एंड इसमें आपको वीकेंड पे करना है, कोई जीटीटी ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सबके लिए सेम फ्राइडे एंट्री एग्जिट्स वाला, फ्राइडे क्लोजिंग प्राइस एंट्री एग्जिट्स का रूल है. एंड लेट्स से ड्यूरिंग द चैलेंज अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रो कर गया, फॉर एग्जांपल 1 CR से 1.15 CR हो गया, तो एडिशनल 15 lakhs you can park it in cash, you can use that fund to put that money wherever you like, but overall आप 70:30 का रेशियो मेंटेन करिए. ड्यूरिंग द चैलेंज इफ यू फील कि मार्केट नीचे आ रहा है एंड यू माइट लूज on returns, तो on the on that Friday or on the coming Friday आप अपना एक्सपोजर कैश में कर सकते हो, मतलब अपने स्टॉक से एग्जिट करके बैठ सकते हो. आपको लगता है अगर ये अभी 3 महीने बियरिश मार्केट ही रहने वाला है तो थोड़े टाइम के लिए बाहर जाना भी कभी कभी सही होता है, तो दैट डिसीजन इज ऑल योर्स. पूरा पोर्टफोलियो 100% से लेकर के 30-20-0 कितना कैश में जाना है, कब जाना है, दैट इज ऑल योर चॉइस. दैट्स हाउ यू विल डू इट इन real trading or real investing journey as well, so that all of that is applicable. And this is just a disclaimer here, is just you're not I mean, all of us are very matured and senior people. Nobody is expected to actually go and trade in real and say कि वहां पे उनके पोर्टफोलियो में ऐसा था तो मैंने ले लिया और मुझे लॉस हो गया. So nobody is to be held responsible for any actual financial impact to your real portfolio. It's just a game, learning fun. It will nudge you on a weekend to think differently, think in a competitive way, to also to analyze how others are doing things, what is their thought process. You can ask them, of course, in the group you can discuss whatever you want to discuss, and पूछ सकते हो कि आपने सर ये स्टॉक क्यों लिया था, क्या दिख रहा था आपको, कहाँ से ढूंढा था आपने, या उससे एग्जिट क्यों कर दिया आपने, वो सब डिस्कशंस कर सकते हो, healthy discussions. And the purpose is that throughout the competition or the challenge you will see how others are thinking, basically human behavior kaisa hai. Of course 50 is a very small sample size when we talk about looking or judging human psychology or behavior, and we really don't know what lies in future ahead of us. बियर मार्केट भी हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, अगेन बुल मार्केट भी हो सकता है. So how each of us are making decisions in an uncertain environment. So it's a level playing. I mean, we start from the same day with same risk, same uncertainty, and but approach differently. All of us, right? हम अपना अपना रूल लगाएंगे, अपना अपना ब्रेन लगाएंगे to make sure we are at least in the top 10, top 20. So I've created a leaderboard. So today and tomorrow you spend some time. 1 घंटा भी बैठोगे इसमें, आधा घंटा भी बैठ जाओगे, आपका पोर्टफोलियो बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा. एंड वीकेंड पे तो एडजस्ट करना इज जस्ट अ 5-10 मिनट जॉब. तो आपको करना क्या है, सब लोग को
Before I go to the portfolio, यहाँ पे सबका rank आ जाएगा automatically. This sheet will be locked. It will be only have a view only access from where you can navigate to your portfolio as well as others portfolio view only. But edit access आपके पास अपनी sheet का रहेगा. इसमें rank अपने आप आ जाएगी as Monday closes. जो सबका क्या रैंक है वो सब आ जाएगा अपने पास. अभी मंडे के बाद ट्यूसडे हॉलीडे है तो मंडे को हो सकता है बहुत लोगों की रैंक सेम ही हो, वो सब होगा. बट एज वी गो फार इन द जर्नी सबका रैंक प्रॉपर सेट हो जाएगा. इन्वेस्टेड इज हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड. किसी ने 70 यूज किया है, किसी ने 30 लाख यूज किया है, किसी ने पूरा 1 CR यूज किया है. मेरे जैसे पागल लोग जो पूरे ऑल इन जाने वाले लोग हैं. एंड देन यहाँ पे इन्वेस्टेड दिखेगा. दिस विल शो आपका प्रॉफिट लॉस कितना है, कि 20,000 प्लस चल रहा है या -20,000. ऑल दैट एब्सोल्यूट नंबर विल कम हियर. This is the current value. Say you invested 75 lakhs, but the current value is 77 point something lakh. So that will be the current value of your investment. Return on investments very clear. कितना ROI चल रहा है आपका. So ROI and ROC में बस इतना फर्क है. ROI is return on the investment you made and return on capital is only total 1 CR. आपने 70 यूज किया है बट 30 lakhs आपके आइडल पड़े हैं, तो ऑफ कोर्स योर रिटर्न ऑन कैपिटल वुड बी लो. एंड दैट्स हाउ दैट इज आल्सो हैपेंड इन रियल लाइफ. हमारे पास आइडल फंड्स होते हैं जो बैंक अकाउंट्स या इधर उधर पड़े होते हैं, हमारे अनयूटिलाइज्ड होते हैं, एंड वी आर जस्ट ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी. सो दोनों चीजों को हम लोग ट्रैक करेंगे. बट एटलीस्ट हम जो लीडर बोर्ड को रखेंगे वो हम ROI पे रखेंगे, नॉट ऑन ROC. या दोनों भी रख सकते हैं, बट एक चीज पे फाइनल कर लूंगा मैं कि किस पे लीडर बोर्ड डिसाइड कर रहे हैं हम. आई थिंक इट शुड बी ऑन ROC. मे बी दैट वुड बी द फेयर जजमेंट, बिकॉज इफ समवन इज गोइंग ऑल इन देन ही शुड गेट दैट ROC, राइट. अगर कोई 10 लाख पे 1 लाख Yeah. I mean, it should be ROC. Ultimately, the valuation is on that. Correct. Alpha is, I think all of you understand, but just for someone if doesn't understand, it's called like if Nifty has given, just say for example we were discussing this portfolio, Nifty has given 10.7% return in the last 344 days, whereas our portfolio has given 25% return. So 25 minus 10 point something is 14 point something. So 14 point something is the alpha we've generated. If it is positive, it's a positive alpha, meaning you have outperformed the benchmark index. If it is in negative, whatever you are doing is just not going right. You need to just think differently, or at least जो अच्छा कर रहे हैं हमारी लीडर बोर्ड में उनको देखो, उनसे सीखो, उनसे पूछो, उनसे डिस्कस करो, फोन लगा के बात कर लो, कुछ भी. So that's the only purpose of it. Market may be at near to highs and we don't know कल crash हो जाए या परसों हो जाए. So it's okay. It's just a fun process. And I mean I don't expect anyone कि of course मैं भी bottom में हो सकता हूँ, कोई top पे भी हो सकता है, and 3 months down the line bottom वाला top पे भी आ सकता है. So just don't, I mean we are senior mature people, just don't troll anyone. It's a funny thing, funny world. So take it in a positive in the spirit of a game and a sport. Be a sport. That's all I wanted to say on in this uh, major dashboard sheet that we are having here. So it will be really nice अगर आप कल तक यहाँ पे सब लोग डाल दो, ताकि यहाँ पे थोड़ा भरा भरा डैशबोर्ड दिखेगा, सब लोग के लिए अच्छा लगेगा, एक कंपटीशन की किक आएगी. Because if people have signed up, then they should really fill it. ऐसा नहीं हो कि मुझे ग्रुप में रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, वो अच्छा नहीं लगता है. So you can just think and finish it by today or tomorrow. All right. So let me just go here and just show how the portfolio is looking like. So इसमें पोर्टफोलियो में आपको यही सिंबल्स यूज करने हैं जो मैंने शीट में, जैसे यहाँ पे प्रियम सर की जैसे ये शीट है, सबकी शीट में एक शीट 2 है, शीट 2 में से यहाँ से सिंबल्स यूज कर सकते हैं. नहीं तो जैसे मैंने ये मेथड सिखाया, आप यहाँ से ये स्पेस के बाद में जो भी है वो कॉपी करके वो भी वहां पे ले जा सकते हैं. अगर वो
सिंबल वहां पे नहीं है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आज एवरेज प्राइस विल बी आपकी फ्राइडे की एवरेज प्राइस, लाइक परफेक्टली उनका पीएनएल अभी जीरो है क्योंकि ही इज जस्ट स्टार्टिंग, तो ये जीरो होना चाहिए। अभी उन्होंने आई थिंक 70 लाख का टोटल फंड यूज किया है, वो ग्रुप में भी कह रहे थे, और शायद उनके कुछ फंड्स खाली है, नहीं ये शायद उन्होंने 70-30 का एलोकेशन रखा हुआ है, बट he used I think some funds and some are idle, so all you can do that। यहाँ पे कितना 25 I think कुछ लाख इन्वेस्टेड है, so you can use up to 1 CR। तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी क्वांटिटीज कितनी कितनी क्वांटिटी की लेनी है डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स, कितना डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, वो सब आपको सोचना है, राइट। तो ऐसे आपको डालना है। नाउ द next step, once you finalize this, will kick off from the next week। अगर जरूरत पड़ेगी हम दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक टुडे फॉर जस्ट हाफ एन आवर चिट चैट। यहाँ पे सबको डालना है, मैं अपने में जाके दिखाता हूँ। जैसे ऑन दिस वीकेंड मेरे पास एलगी इक्विपमेंट स्टॉक था, इसमें हमने इतने पे एंट्री की थी, इतनी हमारी क्वांटिटी थी, हमने 60,000 इन्वेस्ट किए थे, हमको इसमें 10,000 का 9,000 का लॉस हो गया, अराउंड 18%, राइट। मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय दिस, एंड हमने 532 वाला स्टॉक वो 450 के आसपास एग्जिट कर दिया। जब ये एग्जिट किया मैंने, राइट, तो 60,000 में से 9-10 हजार चले गए, तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट था वो मैंने इसमें वेल कॉर्प में डाल दिया, राइट। ऐसे आप रिबैलेंस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 1-to-1 रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास नंबर ऑफ स्टॉक्स की जगह खाली है, तो ये 60 को मैं इस हफ्ते मेरे को 3 अच्छे आइडियाज मिले हैं, तो आप इसको 3 में डिवाइड कर सकते हो, 20,000 जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल आई एम टेलिंग। वैसे भी कर सकते हो, तो आपने एग्जिट एक किया पर आपने एंट्री 3 की, वो रिबैलेंस में ऐसे आ जाएगा। तो आपको ये ओवर द वीकेंड में 5-10 मिनट का एक्सरसाइज है, वो करना है, और आपका अपना पोर्टफोलियो को फ्रेश रखना है, लाइव रखना है। पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं, पार्शियल एग्जिट भी कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, उसमें देना आप क्वांटिटी मेंशन कर देना यहाँ पे। 113 में से 70 एग्जिट किया आपने, दैट शुड बी फाइन। और ये एंट्री कॉलम फिक्स्ड है या एंट्री कॉलम चेंज कर सकते हैं, एंट्री का रेट? एंट्री आपका यही रहेगा, जो आप एवरेज यहाँ डाले ना, वो आपका एंट्री रहेगा, और एग्जिट आपका रहेगा जो, जैसे आज ये दिखा रहा है MNM 1544, और लेट्स से नेक्स्ट फ्राइडे को ये LTP होगा, यहाँ पे जो भी LTP आएगा 1400 हो गया, मेरे को लॉस हो गया इसमें, वो आपका एग्जिट प्राइस हो जाएगा नेक्स्ट फ्राइडे, जस्ट फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे को। ओके, तो सारी वैल्यूज यही मिलेंगी, यहीं से यूज कर। Sorry. So Yeah, it's please. compulsory that fully I have to use it. I can just put 2 stocks right now and then wait for the other entries. Is it okay? Yeah, that's okay, but 2 stocks में कितना फंड्स यूटिलाइज करने वाले हैं, वो आपको थोड़ा सोचना है कि I mean it's okay। Because for me the reason is that I will not be able to track so much now. Okay, so at least if I'm having a limited stock 4 to 5, so at least I'll be able to track it, the entry and the exit accordingly. Okay, yeah, I mean totally your call, जैसे भी आपको लग रहा है, but at the end you have to also think that towards this competition, how can you come towards the top? you lose on idle capital, right? and अगर वो बुल मार्केट था, तो लेट्स से वैभव जी का पोर्टफोलियो भाग गया, आप पीछे रह गए क्योंकि आप 2 ही स्टॉक में बैठे थे, मतलब Right. just think every possibility what can go right and wrong, so that's the fun part यहाँ पे, ठीक है। I know, I can understand, but then maybe वो प्राइस निकल जाएगा and I will not exit and वो स्टॉप लॉस बताएगा मुझे, मतलब it will show me loss for me. Okay. ठीक है। Let's आप see. मितू जी बात कर रहे हैं क्या? Sorry? यो मितू जी? No, I'm Gulzar, yes sir. ओके, गुलजार। सो आई मीन गुलजार जी, मैं जस्ट यही कहूंगा कि इट्स अ गेम, आप प्ले करिए, 2 स्टॉक्स में मत लिमिटेड रहिए, थोड़ा सा एक्सपोजर लीजिए, ताकि आपको थोड़ा फील भी आएगा, और इक्वल। अब जैसे प्रियम सर ने पूरा भर के बैठे हैं, 28 स्टॉक यहाँ, 28 तो मुझे यहीं दिख रहे हैं 25 की सर लिमिट रियल में। में होता तो भर देती थी ना।
No, see, only one thing I can tell, there is a good number, sweet spot for diversification. 2 is a very small number, and maybe beyond 30 is a very, 40 is a large number. So you have to think analytically ki what should be the right thing, right? आपके 2 स्टॉक में एक में कल लोअर सर्किट लग गया, अगर लग गया बाई गया चांस, तो फिर वो तो वो आप -10% में 2-4 दिन में आ जाएंगे. तो रोहित भाई यस यस, प्लीज गो अहेड. अभी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं. कौन बोल रहा है? आशीष. हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे I'll just ping me your email address. I'll just add your link. यहाँ पे आपको email पे आ जाएगा. राइट राइट. अच्छा मोहित, यहाँ पर वन स्मॉल क्वेरी. अगर एग्जिट करना है एंट्री के लिए तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया ना स्टॉक, जो लार्ज मिड कैप स्टॉक और ये है आपको वहाँ पे एंट्री कर दिया. एग्जिट करने के लिए वी हैव टू एंटर इन द बुक ट्रेड. हाँ, वहाँ पे एंट्री करनी है आफ्टर फ्राइडे क्लोजिंग के बाद सैटरडे संडे एंट्री करनी है ना. बुक ट्रेड मीनिंग आपने एग्जिट कर दिया, आपने बुक कर लिया. जैसे इन्होंने वर्लपूल में इनको लॉस हो गया, ये बाहर आना चाहते हैं तो वो बुक कर दिया, राइट? जैसे मैं यहाँ तो फिर उसको एंट्री के लोकेशन से डिलीट करना पड़ेगा ना और बुक में डालना पड़ेगा ना. हाँ, जैसे एलगी इक्विपमेंट, मेरे मान लो एलगी इक्विपमेंट यहाँ था, अभी मुझे लॉस हो गया, मुझे बुक करना है, तो मैंने इसको यहाँ डाल दिया. उसकी जगह मैंने वेलकॉर्प रीबैलेंस किया, तो मेरा ऑडिटर देख लेगा कि इसने हाँ ये हटाया है और अभी वेलकॉर्प इसका यहाँ पे आ गया है, इसकी जगह इसने ये एक 1-to-1 एडजस्टमेंट किया या 1-to-2 एडजस्टमेंट किया. तो ये रीबैलेंस मतलब अब गोइंग इनटू द नेक्स्ट वीक आपका ये स्टॉक जा रहा है साथ में और एक बाहर आ गया है. बट क्या हमें ऊपर की एंट्री डिलीट भी करनी पड़ेगी जो हमने ऊपर में लिखी है, जब ये स्टॉक परचेज कर रहे हैं, देन वी आर मेकिंग अ एंट्री नो. और डॉक्टर सचिंग, हाँ, तो जैसे ये इसमें से महाराष्ट्र बैंक से एग्जिट कर दिया, तो महाराष्ट्र बैंक का आप ये दोनों डिलीट कर देना, राइट? और उसकी जो जगह लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक वाला जो सेक्शन है ऊपर में, वहां से उस एंट्री को डिलीट करनी पड़ेगी ना और बुक में डालना पड़ेगा. करेक्ट. आपको यहाँ से एंट्री ऐसे नेम डिलीट करना है, जैसे मैंने महाराष्ट्र बैंक का किया, और उसकी जगह आपने जो भी आपने एंट्री की है वो स्टॉक नेम, उसकी एंट्री प्राइस जो कि उस फ्राइडे की प्राइस होगी, और कितना क्वांटिटी में अब आप गए हैं वो आपको यहाँ डालना. और उस ओके. और इवन इफ वी आर कीपिंग कैश आइडल, दैट्स ओके. बुक कर लिया, सपोज प्रॉफिट बुकिंग किया, तो फिर तो कैश आइडल ही पड़ा रहेगा ना, कोई और स्टॉक नहीं दिख रहा है खरीदने के लिए, देन दैट मच कैश विल बी शोन एज आइडल नो. यस. यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपने उसमें मतलब कितना, जैसे 1 CR माइनस इन्वेस्टेड इज योर कैश आइडल, आपको करंट दिखता रहेगा कितना आइडल है अभी. वो तो ऑटोमेटिकली दिखेगा, उसमें हमें कुछ नहीं करना है. वी हैव टू जस्ट एंटर इनटू दिस फोर कॉलम्स. लार्ज मिड कैप स्टॉक का जो आपने ऊपर में कॉलम बनाया है, एक दूसरा स्मॉल कैप स्टॉक का बनाया है, उसमें एंट्री करनी है. और कुछ सेल कर दिया तो नीचे में बुक ट्रेड में डाल देना है. कुछ एंट्री और रीबैलेंस में अगर और एक नया एंट्री किया तो रीबैलेंस में तो एंट्री नहीं करनी है ना. व्हेन वी हैव टू एंटर इन रीबैलेंस सीट, रीबैलेंस में भी करनी है, ताकि ये रीबैलेंस का आपको यहाँ हमको दिखे कि आपने ये यहाँ से एग्जिट किया और इस डेट को आपने ये एंट्री किया था ABFRL में. अच्छा, तो कभी भी नया स्टॉक ले रहे हैं या ऐड कर रहे हैं. देखिए, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कर रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं देखूंगा कि आपने भी आए थे ABFRL में और आपको भी लॉस हुआ था, और आप इस दिन पे यहाँ निकल गए थे ABFRL से यहाँ आप 10,000 का लॉस आपको भी लगा. तो ऐसे क्या हिस्ट्री ट्रैक रहेगी आपकी भी. हेलो एमके. नहीं, बट मेरे पास सर बैलेंस कैश अगर है तो फिर मुझे रीबैलेंस में क्यों एंट्री करनी है? मैं तो नया एंट्री ऊपर में डाल दूं ना. रीबैलेंस में इसलिए एंट्री करनी है कि आपको खुद को पता रहे कि क्या हटा के आपने किस टाइम पे क्या डाला था, आपने क्या जजमेंट लिया था. नहीं, हटाया हो तो मैं बुक्ड में डाल दूंगा, बट अगर मेरे पास कैश पड़ा हुआ है. अच्छा, ओके. So once I have made portfolio and whenever I am adding one new share to my portfolio, I have to make entry in rebalanced. Yes. That's okay. सर ये क्या है ना, पूरा कॉन्सेप्ट जो स्मॉल केसेस है ना, स्मॉल केस एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कब क्या सोच के क्या डाला था. ये सही सोच है. रीबैलेंस में डालेंगे तभी तो समझ में आएगा ना कि बीच में नई एंट्री ली तो हमने क्या सोचा, एंड व्हाई वी परचेज दिस स्टॉक आफ्टर अ वीक और अ मंथ टाइम, व्हाटएवर टाइम, तब समझ में आएगी. सही बात है. यस सर. या बैलेंस फंड था, उसको क्यों यूज किया दोबारा, क्या रीजन था? अगर
शेयर सरप्लस फंड भी पड़ा है, किस स्टॉक में क्यों डाला, किस किस डेट को डाला, क्या सोच के डाला? नहीं ठीक है सर, वो समझ गया, मैं समझ गया, अंडरस्टूड नाउ. Hello, MK, can you hear me? Just play around these 4 seats, that's it. I mean, Yeah. और ज्यादा कुछ टच नहीं करना है इसमें ज्यादा. हाँ, समझ गया. टेक्निकली आई एम आस्किंग, आई एम आल्सो नॉट दैट टेक्निकल फ्रीक ना, तो आप लोग के जैसे आईटी का आइडिया उतना नहीं है, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए यहाँ पे. हाँ, फीलिंग में चीजों के. Yes, please go ahead. See, I have done my entire portfolio of mid cap / large and small. Can you have a see? I may tweak 1 or 2. Who is this? Jaya. Oh, Jaya ji. आप कहाँ गया? ये रहा. Okay. Is it okay? Yeah, you all the funds, right? I've utilized 100%. But the only thing is आप को Friday का LTP use करना है. So I did Friday का Zerodha से last Friday. नहीं, आप ये Google वाला use करिए, Google Finance का data का, because you see we are already showing as minus 0.68%. Yeah, so you should start with 0. So the only thing is what needs to be done here is, एक मिनट मैं ये decimals on कर देता हूँ सबका. And यहाँ पे भी just match your just one second sir. Just average price को आप LTP price के साथ match कर लीजिए. Right, जैसे this is this should be 237.9. Just make a small adjustment. It should be 0. Okay. Thank you. Yeah, sir. Please go ahead. Can you check the formula at B32? B32. Yeah. Yeah, this one. Because for me it does not add up. So. कौन बोल रहे हैं सर आप? मेरे को actually प्रियम. आपका शीट खुला हुआ है. Okay. It should be okay. मैं इसके बाद आपका चेक कर लेता हूँ सर. ठीक है. मुझे आप WhatsApp पे कर लेना. So that yeah, we can take questions अभी. ठीक है. फिर ये we can do it. So anything else anyone wants to ask or? MKG Darshil here. हाँ दर्शिल जी. Sir, इसमें एक ही था, if someone has exceeded the stock limit of 25 and auditor also by chance anyhow missed it, then what if it brings to our notice, then we should inform the auditor or the any such way, like for that how we will be changing the portfolio or something. For example, अभी प्रियम सर का you see he is having 24 plus, I mean 30 plus stocks. So yes. The auditor job is to tell him, let's say who is Priyam sir's auditor. Okay. ये रहा. Subramaniam ji has to tell Priyam ji, hey Priyam ji, why are you going beyond 25? I mean, एक दो स्टॉक ऊपर नीचे चलता है. I was under the assumption that 25 refers to each sector, each large, mid cap and small cap, like that. Okay. See, plus minus 1 2 okay, but just if it's 25 in total, then okay, I'll reduce it accordingly. Sure, sir. Yeah. No worries. Okay, sir. Okay. An auditor job is also to take a screenshot or put it as in sheet or in a system to just ensure. जैसे कि अभी Jaya ji has made this portfolio. Let's say I am Jaya ji's auditor. I will take a screenshot. Okay, Sunday को उन्होंने ये portfolio बना के lock कर दिया था. And next week when I come back and see, I will be able to, if he has already done the adjustment, I will be able to see, okay, comparing from that screenshot to this, he has exited a certain stock and entered this one, and rest everything looks consistent. Meaning कुछ भी within the week bump up नहीं किया, कुछ भी कोई top gainer वगैरह नहीं डाल दिया.
Okay, so that's the only. And ये जया जी, when you begin and all of us when you begin, ये आप empty कर सकते हो. जहाँ पे formulas है वो आपको editable नहीं होगा, but बाकी आप empty कर सकते हो Yeah, because we sure. are starting fresh. Okay. इनके जी मैं एक्चुअली मदरसन सुमित ऐड करने का ट्राई कर रहा था, हुआ नहीं मेरे से. एक बार वापस से हेल्प करेंगे उसमें. मदरसन, ये इसका सर नेम चेंज हो गया था शायद, है ना, ये नाम हो गया था इसका, तो ये इसका सिंबल ये होगा अभी. ओह अच्छा, एक सेकंड मैं जूम करके देख लेता हूँ. कहाँ पे डालना, मैं ही डाल देता हूँ. या तो मैं यहाँ पिन कर देता हूँ. चैट कहाँ गया, चैट ये लीजिए. ये सारे ना मेरे को आप 1-to-1 डीएम कर देना सारे. व्हाट ईमेल आईडीज टू बी एडेड एंड देयर नेम. ओके, क्योंकि अगर ये कॉल क्लोज हो जाएगा ना, आई लूज ऑल दिस. तो जस्ट व्हाट्सएप पे एक बार लिख देना. आई आफ्टर दिस कॉल आई जस्ट ऐड पीपल हु वांट टू जॉइन. ओके. एंड जैसे आपने ईमेल सबको ही का डाला है, अगर सब कंफर्टेबल है तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, ताकि अगर एक दूसरे को कभी कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं. एंड अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं कि भाई इधर व्हाट्सएप या कॉल हाउएवर कंफर्टेबल. डाल सकते हैं. अभी तो आई हैव लॉग्ड एक्सेस टू एवरीवन को व्यू ओनली एक्सेस दे दिया है. वैसे भी ग्रुप में नंबर मिल जाएगा आपको सर, चाहिए तो, मतलब इट्स अ पर्सनल थिंग, आई डोंट नो. इफ एवरीवन इज ओके आई कैन अपडेट, अलाउ ओपन एडेड एक्सेस जस्ट फॉर टुडे. And I would request, most of us would have day jobs. So if we can restrict phone calls and only do WhatsApp, that will be great. Agreed. Yeah, I agree as well. More than anyone, I agree. Hi, Ankit here. जब काफी डाउट हो जाए तो मोहित से गूगल मीट करवा देंगे, देन वी कैन डिस्कस आल्सो. वो भी बेटर है. फोर्टनाइटली 1-8 घंटे का ऐसा हो जाए तो वी कैन डिस्कस विद ईच अदर. जो भी बेस्ट परफॉर्मर है, लाइक यू नो इन अ मंथ और सो वी कैन डिस्कस कि व्हाट ऑल थिंग्स ही लुक्ड एट एंड हाउ ही डिजाइंड हिज पोर्टफोलियो. सो दैट आल्सो इट कैन वर्क आउट. वो सर वीकेंड पे करेंगे बीच में कभी कभी, तो ताकि वी आर इन टच ऑन महीने में 4 बार कर लिया है. हां या MK ji, good morning. Sorry, I got joined late actually. या नो वरीज. कौन बोल रहा है? हाँ गुप्ता बोल रहा हूँ. यस सर. Yeah, actually what I understand, like we will take the entries in the left top corner where we have these entries based on the Friday LTP, and we will make it P&L 0. P&L 0 match the LTP. Then Yes. Whatever the in between transactions are there, that will be done in book trades. That means a small quantity or adding quantity are these things. Yes, sir. Correct. Suppose we made some profit, then we will be having some more money. Then we have to add some more. Yes. For example, Jayaji is right now making her portfolio. You can see she just did everything zero. Earlier उनका यहाँ पे P&L आ रहा था because she took Zerodha's prices. Then I told her to use this LTP column of Google Finance. So she has made everything to zero, and now she is right now removing these. See, यहाँ पे negative 70,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये booked losses है ना यहाँ पे. That is also included in the portfolio return. So once she removes everything, it should be net zero, like how Priyam sir has done. उनका बस total investment वाला formula कुछ कह रहे हैं वो, मैं इसके बाद check कर. ठीक है. Then अभी ये कितने दिन के लिए रहेगा? दिन या महीना कैसे? स्टार्ट करते हैं सर, एंड देन देखते हैं कहाँ जा रहे हैं. And if people really likes it, we can continue. अगर बोरिंग हो रहा है and nobody is doing it, then stop कर देंगे. जब स्टॉप करेंगे, जो सबके कंसेंसस से वोट ले लेंगे और जो विनर होगा उसको कुछ अवार्ड दे देंगे. ठीक
ठीक है. And इसका reasoning आप पूछ last time when we have started this discussion initially, like why we have selected that stock on all these things. वो reasoning एक लिखने के लिए आप बोल रहे थे. वो किधर लिखना है? वो मैंने यहाँ शीट में तो उसका रीजनिंग नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे आप लेट्स से अगर ये कंपटीशन 6 महीने या साल भी चलता है तो बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे जाएंगे, तो बहुत सारे रीजंस हो जाएंगे. उससे बेटर क्या है, जो इसमें हमारे लीडर बोर्ड में आएंगे, टॉप टॉप 4-5 पीपल, वी कैन रिक्वेस्ट देम कि एक वीकेंड पे वो आके आधा घंटा 15 मिनट अपने रीजंस लाइक जनरल हाई लेवल पे बता सकते हैं. इंडिविजुअल स्टॉक लेवल अगर नहीं बताना चाहते तो थोड़ा नॉलेज शेयरिंग इन विच एवर फॉर्म they are comfortable, we can do that. Okay. Hi, MK, Ankit here. Hey, Ankit. Just a suggestion कि अगर if possible, अगर अपने amongst the, let's say we have about 40-45 individuals who are participating. For the interest of the group, अगर हम देखें कि कौन से stocks most of the portfolios में हैं, so that will also give everybody kind of a bird's eye view. While individually हम अपना selection कर रहे हैं, but as a group, if there are like most likable stocks, जैसे screener या कहीं पे आता है, that will also give all of us kind of a view like कहाँ पे some fundamentally technically कौन से stocks उभर के आ रहे हैं. तो if we can do something on those lines, it will be really beneficial for everyone. और एक वो पॉइंट था. दूसरा ये है कि आई नो यू पुट ऑडिटर्स वाला ये कॉलम. we can also look to take archives on every Friday, and that can be logged for edit. अगर वो कहीं पे अपने इस्तेमाल करें तो maybe जो manual involvement है that will come down. Like we can gear towards more like archives every week. सबका एक portfolio जो भी था, that can also help us in understanding कि जो weekly अपने rebalancing और की बात कर रहे हैं, what changed. क्योंकि एक बार archive होके then we can't edit those. So those were two points I wanted to share. So you are recommending कि auditor can take a dump of his portfolio? Yeah, just अगर हम खुद भी हमारा archive कर ले, more of self discipline and to avoid any manual work, I was thinking कि भाई अपना archive करके if we can put it in a Google Drive as a shared folder में, Yeah. so then it just helps us in like getting more into analytical. And of course जब तक अपने को कोई एक robust solution नहीं मिलता, we can keep this manual check. Actually it's a way to interact with other people also. जो अगर आप auditor हो या auditee हो, you will be interacting, which is great. But जैसा किन्नन ने कहा कि if they're in a full-time job, if they're not able to do their part of auditing, it can be a substitute कि भाई हमने खुद हमारा archive ले लिया and it's available for review. After all, it's all in the spirit of learning at the same time. So yeah, I agree. That's true. Yeah, the one hi MK, Chandra Pratapan here. Just the only downside on that, Ankit, is that somebody forgets to archive, then it becomes an issue because you have to archive at the end of the week, correct? Right. So Right. if somebody misses that, then it becomes a questionable or doubtful thing. Yeah. That is one problem maybe there. That's yes. Yes. मैं personally क्या करने वाला हूँ ना, let's say मैं जया जी का auditor हूँ, I will just take a screenshot. ये लिया मैंने और मैं जाके अपनी शीट में कहीं स्टोर कर लूंगा. जैसे दिस इज माय शीट, ये मेरा जया जी का लास्ट वीक का मेरे पास. Kind of an archiving. Now next week I'll come back and see, oh, Jaya ji has exited this stock, she entered this stock, and the rest everything looks consistent with my screenshot, meaning she has not forged any data within the week to inflate his ROI number or ROI number. That's the only thing I'll do. Yeah, but I mean, totally up to you how you want to archive or take screenshot or want to interact. Just don't disturb the person too much. Okay. Yeah, it's just a game after all. It's a play. Well, the first suggestion is quite good actually, because you can have if somebody can get the data, look through the data and get some,
information out of it as to which are the So popular stocks or which are the least popular yeah, stocks. that we can do. Probably once we are in mid of it, 1 or 2 weeks down the line, I can club all the stocks and then give some analytics. Okay, these are the most common stocks in each portfolio. This is the best 2 or 3 winning stock, whosoever it in whichever portfolio it is, and these are the most common losing stock in all of us. Some insights, analytics we can definitely, Yeah, if there some is good analytics. data, we can derive meaningful insights definitely. I have a query, MK. What if I have updated it not on a Friday but on a Sunday night? But my auditor has already taken the screenshot on Friday night. दैट्स ओके, वो मंडे को आके ले लेगा स्क्रीनशॉट, इतना ठीक है, दैट शुड बी ओके, मंडे को ले लेगा. मैं फॉर एग्जांपल, if whatever you do, I'll be still able to figure it out on a Monday also, right? Because you will specify this thing you exited and this thing you entered, and I have your previous week ka snapshot. So if you have cheated, I can figure it out if I want to, right? Okay. He says that auditor himself should be good in auditing. That's another thing. Okay, too much of auditing. Then let's not go that route. I mean, जरूरत पड़नी नहीं चाहिए. It's just that थोड़ी सी seriousness रहे, बस इसलिए है ये. MK, I joined late. Maybe there are a few others who joined late as well. I mean, this sheet, it will help if you can, I don't know if you walk through the sheet, Google sheet that we are updating, This one or the portfolio one? the portfolio one. Okay, so I'll just give a quick thing again. So basically, इसमें ऊपर there are two tables. Ignore these in between ones. This is some personal work that Priyamji is doing, which is great. So यहाँ पे he is having stocks. Stocks के symbols he has taken from this list. You can go Yeah. beyond. You can go beyond this as well. Meaning any stock which is not micro cap, not operator driven stock, you can pick it, put it in your small cap if you want to, if like you really, or also, I mean, having it in your real portfolio as well. And then every starting today, your portfolio should be starting with net zero, and total max 25 stock, and your LTP, your average price should be equal to the LTP, correct? Then Yeah. once you do this, the above two table is done. This week you don't have to do anything like book trade or rebalancing because we are just starting. But next week, let's say Relaxo is down 10%. I want to exit this. So Relaxo को हम यहाँ डाल देंगे book trades में, and in place of Relaxo, let me show you my sheet. कहाँ गया? Say I had this one in this portfolio. LG equipment was there. It hit some threshold, stop loss, or whatever risk management, and instead of that, Wellcorp was added. So I made a 10,000, 9,000 rupees loss out of 60,000 investment. Let me make it big. And the remaining amount, I now put it in the new stock, right? Wellcorp में. वो अलग बात है, Wellcorp भी उसके कुछ after 1 month or so, it also like went 25% down. So like this, you will able to see what entries you made on what day as part of rebalancing, and when did you exit. So all your this will encourage the bookkeeping practice, or trading journal mechanism. It will bring it in you, and that will uh, I mean, after a month or so, आपको कभी भी अपना हिस्ट्री देख सकते हो कि what mistakes you did, something you preemptly exited but वो बाद में ऊपर चला गया, या फिर things like okay, I held this stock way too long,
ये मेरे को 13%, 12, 10% पे काट देना था, अभी 30% लॉस हो गया इस वाले में, right? So that's the purpose of having book trades and rebalance. So once you book this, so let's say I book IDFC, IDFC को जब मैं बुक करूंगा तो जहाँ पे जो रीबैलेंस वाला है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा. I this removed with this, the new LTP as of that Friday is this, and quantity is the new quantity based upon IDFC's price, right? The quantities will again change, and you will this investment, new investment will be equal to the new entry here, right? Because you took a loss, reduce that entry, reduce the new investment you made. It is also possible that you want to exit one stock but enter two stocks or three stocks. So again, your total investment of that would be reflecting here in the new three you added of after coming out of, let's say, one, right? You can exit as many stock on a weekend, and you can entry as many as stock as per your exit. But the only thing is, overall you don't have to cross 25 limit, including both, not individual, including both. 25 को ब्रीच नहीं करना है, एंड जो 70:30 का रूल है, allocation towards one segment should be consistent. 70 और 30 का आपको allocation exposure रखना है. Thanks, MK. The only thing question I have is on the rebalanced table. It will always reflect just that 1 week, current week, rebalancing history. It will not. No, we'll have a log. So if you see for this thing, yeah, 9th is like September, and then it went till November. So this is a real was a real portfolio, and 3 months, 4 months hand holding tha, and then we stopped. The person is doing on his own. It's a family relation. So you can see here we have trade, book trades and rebalance trade log for 3 months. So ऐसे आपका पूरा जब तक कंपटीशन है, you'll have like whatever 40 or 50 bookings you did and 50 rebalancing you did. आपके पास पूरा हिस्ट्री अवेलेबल रहेगा आपकी जर्नी का. ओके जी, मैं आनंद बोल रहा हूँ. मेरे शीट में अगर देखूंगा तो वो LTP अपडेट नहीं हो रहा है. 3-4 स्टॉक, मतलब फर्स्ट तो हो रहा था, अभी लास्ट में जो 3-4 स्टॉक डाला उसमें नहीं हो रहा है. कैन यू हेल्प मी वंस? Just 1 second, Anand. इसका नहीं आ रहा था. जैसे अब गेल, जुबिलेंट फूड, BEL, ये तो आ रहा है. गेल का 116, जुबिलेंट फूड, BEL. मेरे स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा है. LTP भी नहीं आ रहा है, और एक बार रिफ्रेश करिए सर, मेरे को दिख रहा है. क्या करना होगा? रिफ्रेश करिए. रिफ्रेश ये कैसे करते हैं? ये रिफ्रेश, ये जस्ट स्टार्ट रिफ्रेश. अच्छा, जस्ट साइड लिंक. हाँ, सॉरी, रिफ्रेश करते से आ गया. एंड सिमिलरली नीचे में जैसे भी वो नेट 71,000 माइनस दिखा रहा है. हाँ, वो ये वाले हैं सर, आपके जो लॉसेस है ना, ये वो सब होगा. ये देखिए, ये जब आप रिमूव करेंगे ना इसको, तब आ अच्छा, जाएगा. बुक ट्रेड्स वाले में से क्या? हाँ, बुक ट्रेड आप रिमूव करेंगे ना, क्योंकि बुक बेसिकली तो वो हाँ, जो पुराना था मैं उसको मिटाया नहीं अभी तक, वो मिटा देता हूँ. हाँ, मिटा देंगे, अभी जीरो हो जाएगा. डन. थैंक यू. और कोई क्वेश्चंस है या सब लोग को क्लियर है? एंड नाउ एवरीवन विल बी एबल टू सबमिट इट बाय at least tomorrow evening. Yes. Please, if anyone still have a question, you can ask. As of now, clear. Maybe next week.
This is My only one comment I have. This is like also helps at least somebody like me who has never done a journal. At least I'll now start the journal for the yeah, this competitive portfolio, and it'll also force me to do the real portfolio. I'll add a sheet for my real portfolio. I've never done a journal, so this is kind of forcing me. I mean, that's a confession that I want to make. So it's one of the reason why I really wanted to join this and really and it will also pick up the discipline. nudge you. It will also nudge you to see ki where are you standing as part of a very small cohort of 50. All of us exposed to an uncertain environment with equal money. How are you performing, and what things others are doing better than you? So a self reflection will also come in a way, in a Correct, correct, positive correct, way. correct. Right now, it's all a lot of subjective analysis going on in your mind, Yeah, and this will perhaps help in terms of really with the data you will be able to see how what mistakes you did and what where you're going wrong or what you're doing right. Yeah, or both ways. Yeah. yeah, absolutely. Yeah, I would like to echo what Sir just said. MK, this is a great step towards bringing all of us together in journaling and also working collaboratively. So kudos to you. इतना time निकाल पाए. पता नहीं आपके दिन में कितने घंटे होते हैं, but excellent job, MK. No worries. As far as it's about markets, time निकाल लेता हूँ. Yeah. Yeah. Passionate, passionate. Great. So, I mean, if someone is in the call and he or she still wants to join, मेरे को WhatsApp कर देना. I'll add. And I think this entry is marked as red because Sir is unwell. So Devenji ko I'll assign as an auditor to someone else. So Sir L.A. Nagshetty sir probably will not be participating because of health reasons. So yeah. MK, sorry, I didn't understand the auditor or auditee part because so everyone should have one person Yeah. assigned as an auditor. So for example, you are assigned as an auditor to राकेश जी. So आपको क्या करना है, राकेश जी की शीट में जाना है. Let's say this is राकेश जी sheet. You can just take a screenshot of something and put it in your sheet as a reference कि उन्होंने ये portfolio lock किया था. And the next week, once you are done with your bookings and rebalancing, you just have to do a small 5 minutes auditing that he has not changed his portfolio within the week. Let's say उनका कोई Axis Bank was down 10%, उन्होंने उसको हटा के वो टॉप गेनर टीवीएस मोटर डाल दिया बीच में. तो वो unnecessarily आगे आ जाएंगे ना आपसे रैंकिंग में. So the only thing is to validate that yes, his portfolio looks consistent, and whatever he has booked and against which he has rebalanced is now reflecting correctly in his or her portfolio. That's the only job of auditor. If you think anything is inconsistent, आप उनको वन ऑन वन बोल सकते हैं कि सर थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट लग रहा है. देखिए ये पहले तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था. This was the thing you finalized, but now this Yeah, looks a little odd. so it's a mutually. So he will, Rakesh ji will audit Someone for else. me, and I will audit for him. So it's both Yeah, works yeah, both ways. yeah. Rakesh ji would also have some assignment. See, Rakesh ji is doing for the next person down is like the next person up you. Oh, I see. It's not mutual. So I do Rakesh ji's and नहीं, it's Rakesh ji not is mutual. not doing mine. आपके और राकेश जी में सेटिंग हो जाएगा ना फिर सर. Just joking. I thought that's the way it works. Okay. Just kidding. Okay. Yeah. Okay. So then the other, of course, if there's we can have some general questions or general discussions, or is that We will if you have time, if anyone wants to be there. yeah, if anyone has anything on the
this sheet or portfolio thing, we can take this. Otherwise, we can discuss anything we want. If anyone is busy, feel free to drop because that's all I had to share today. इनके सर डिलीट करते वक्त सेल को करना है डिलीट या जीरो करना पड़ेगा ना पहले से? क्या डिलीट कर रहे हैं सर आप? नहीं, अगर पहले वाला जो पोर्टफोलियो है ना, जो उसमें लिखा है इक्विपमेंट वगैरह सब बुक ट्रेड्स, मुझे पूरा निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखिए जैसे इन्होंने किया ना, प्रियम सर ने अपना सारा बुक ट्रेड्स निकाल दिया है, सब कुछ डिलीट कर दिया, सब कुछ डिलीट। ये जो जहाँ पे फॉर्मूलाज है बस वो डिलीट नहीं कर पाए हैं बिकॉज I don't want people to lose the formulas and struggle with the sheet. तो बाकी सब कुछ आप डिलीट कर सकते हो as the week goes by. आप next week आगे डालोगे तो formulas अपने आप will catch everything and then start reflecting. सेल को करना है या कॉलम को करना है, वो पूछ रहा है कि एडिटर ऐसे सिलेक्ट, ऐसे पकड़ो, सिलेक्ट कर दो, डिलीट कर दो बस। ओके, हाँ बस पूरा सिलेक्ट करके डिलीट करना है ना? हाँ, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ओके, ठीक है। Okay, any other question? Last call out? No? Okay. Anything else we want to? वो जो अपना डिटेल्स का शीट्स कहाँ पे है सर? अभी मुझे नहीं मिल रहा एक्चुअली। ये वाला? हाँ, ये वाला। ये मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ओके, हाँ। और मैं चैट में भी डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, हाँ। शेयर विद पीपल, एडिटर नहीं शेयर, अभी आपको मिल जाएगा। वैसे ये जीमेल पे भी आपको आया होगा, दोनों, आपका इंडिविजुअल पोर्टफोलियो शीट एज वेल एज दिस डैशबोर्ड शीट। अभी इसमें बाकी का आई विल पुल वंस एवरीवन इज डन, तो मैं कल बैठ के बाकी के कॉलम्स का डेटा पुल कर लूंगा आपके सबके इंडिविजुअल पोर्टफोलियो से। ओके, व्हाट एल्स? As a general discussion, like AMC related, do you have any idea about like the things, how the things are going on? AMC? This asset management companies related. Zerodha news has come, and Geo is about to start, and the government is about to give some kind of relaxation to all these people. Will it be a tough competition for this AMC present companies or how it is? हेलो मुझे हाँ, आपका वॉइस म्यूट हो गया। Oh, so I was just saying कि what I think is it's not going to disrupt anything in general. So it's a very matured market, and Zerodha is just trying to uh, get into this particular, because they have a very huge user base, and they can people are, I mean, many are using coin, yes, and including me, but many are today having mutual funds done through the platforms like Grow, or directly through AMC, or via offline routes as well, mutual distributors.
ETF is like they're not bringing big MF products. They are primarily focused right now. What I read is ETFs only. They said they're like 30-40 kind of ETFs available today, and ETFs are like market specific risk only. Yeah, sector specific ETF लाएंगे वो. So they're just trying to get in slowly, take a baby step into this market because they have a competitive advantage of a very huge user base. ऐसा Because कुछ all of a sudden, all the people are coming. Like Geo has come, Zerodha is coming, and government is also like giving the yeah, discount there and there is a very big opportunity. I mean, it's a mature market, but still there is a very good enough space because not a lot of people currently still are into the markets or are making investments. अब लोग अभी भी बहुत सारा exposure goes to debt funds and PPF and gold, etc. So it's just another way to get people into equities. Do you think our, equity holding pattern overall in the at the market level would be the ratio between say FII, DI, and the natively owned capital? I mean, the ratio will be changing over the period, wherein the dependency on the FII valuation will be lesser. Yeah. I mean, the trend in the way that the way the government is also overall promoting with all its schemes. It's like we want everybody to be there more in the liquid asset rather than kind of the fixed asset pattern. Yes. But real estate has also done really well. While the equities have grown, real estate has also like doing equally well in the last 2-3 years, especially in Gurgaon and Pune and Bangalore. real estate means like DLF and Godrej properties, Soma Realty. These are there like who are having means good debt and debt equity ratio. Yeah, and morning only I was reading about I think Alok ji shared it. Yeah, DLF ka they're increasing the benchmark price. Alok Jain. See, DLF announces an increase in base selling price up to 10,000 per square foot, effective 16th August. So DLF is the market leader. वो करेंगे इस प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं द कैमिलियंस. यहाँ करेंगे तो बाकी के रियल एस्टेट पार्टिसिपेंट्स आल्सो हैव टू कीप अप विद द pricing surge. So that's the thing. It's a booming sector these days. Real estate, let me go to this thing. In equity also, कहाँ गया portfolio, sectoral ranking. See, यहाँ पे if you see where is reality, ये रहा. 6 months return of reality is 24%. अभी ये ज़्यादा था सर. Recently reality has underperformed because of profit booking this August month that has come into reality. नहीं तो last month reality was the top sector. Yeah. अभी इस month media is doing really great and reality ये रहा. Reality you see 18th. So is towards the bottom sector. ये कल वहां पे भी मैं शो किया था मैंने कुछ ग्राफ वगैरह. लेट मी शो यू. मैं खुद भी एनालाइज कर रहा था. दिस इज अनदर वे टू लुक एट इट. लेट मी गो टू डेली. लेट्स से August 1st. So here you can see, right? Nifty कहाँ है?
I think वो पीछे background में कहीं है. So basically benchmark performance has been minus 1.55. Nifty is minus 1.55. Reality is even underperforming. So negative 3%. So there is a very big profit booking going on. Pharma doing really well. And see in the last 2-3 days how media has gone. Right? And this thing although this is a 2D view, kind of a 3D view, you can what I keep sharing in the group is this. Let me go to ये तो नीचे आएगा ये. So where is reality? See this is reality. It is going down, right? So this gives a bit of a view how sectors are performing. But reality is going down, you know, but that's current thing. Is it? Reality is going down. That you also see in here. Yeah, reality. This starting August month at least. Uh, I'm taking August month because we just discussed the table ranking, right? So it is Yeah. underperforming Nifty. So that what it says. Let me go back to that table. Overall it was doing really good. 6 months really good. Even 3 months was good. But now all of a sudden there is a profit booking. In reality, it is in 18th place. Correct. So the this particular thing also gives us similar view that reality all of a sudden from this box which is leading has moved into lagging. Like सीधा वो एकदम weakening में भी time spend नहीं किया direct हाँ ऐसे नीचे गया, right? And whereas these are the sectors who are doing really good. Media थोड़ा bounce लेके फिर media is doing good, pharma doing good, IT slowly taking it up. So these are the ones. Banks not doing good. Private banks you can see Kotak and this one ICICI also on a threshold of breakdown. Let me show. I was looking yesterday. Let me bring ICICI. From 1,000 it has turned back. Yeah, see this. Really at the support, kind of, right? Like the SBI. इसके नीचे तो फिर जाएगा और नीचे. एटलीस्ट इमीडिएट ये वाले लेवल तक जाएगा अगर आई मीन दिस आर ऑल पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज. उसके बाद ये वाले लेवल तक रास्ता खुलता है, राइट? एंड सिमिलरली HDFC बैंक वो भी ऐसा ही दिख रहा है. उसका तो कुछ न्यूज़ भी आया था अबाउट नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स. सी if you see high, lower high, and then going cracking down, right? Previous low has been broken yesterday. Because of all this, I think there is this gap actually gap filling के हिसाब से वो नीचे आ रहा है करके लगता है 1600 के आसपास. गैप कहाँ पे दिख रहा है सर आपको? ये 1600 और 1610 के बीच में वहाँ पे. ये हाँ छोटा सा गैप है. पर ये यहाँ पे भी है. वो फिल हो गया है. या बैंक निफ्टी ऑल्सो इज लाइक वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ गया है. ये सपोर्ट एंड दिस रेजिस्टेंस which resistance turn supports, right? So yeah, once this is done, then can go down, or if it is have to bounce, it is the place to bounce, or it is it is the place to crack. So that's about So it. is this the market is taking? I mean the RBI governor's speech after the RBI governor's speech. You know, this is on the CRR. Is this a reaction to that, or is it just or this is just a stop loss thing? You know, where people are just picking up stop loss, and then perhaps the market is ready to bounce. I'm talking about Bank Nifty. I really don't have a right answer to that question. My view on this is like news will come and go, but
overall we just have to look at the price action. If price action is suggesting, see, it has been suggesting, अगर आप यहाँ से देखें ये एक flag बना यहाँ पे. I keep sharing in group as well. जैसे talking. उसके बाद ये यहाँ पे ऐसा कुछ flag type का बना, तो it has been making flags and breaking it. ये था मतलब bearish flag. So lower highs pattern से आ रहा है नीचे. Then now if these thresholds are also getting broken like 44 level, then just need to be with the trend, and overall the whole world is seeing this head and shoulder pattern. What yesterday इसको break नहीं कर रहा था, and people I think were preemptively buying put options preemptively. So and I was like अभी सब लोग को अगर पूरे ट्विटर को दिख रहा है कि it's a head and shoulder on bank nifty, then it will not break. that is that is true nature of bank nifty. It is designed to fool you. Yeah, yeah. So yeah, so that's it's a $1 million question. Yeah, so yes. Yeah, I have one more questions on the other index. Because they again it's a news based, because Modi talked about PSU stocks, and then there's and there is all everybody talking about PSU rally and all that, and suddenly yesterday there was a many of the stocks crashed. So and some are holding up as well. So again, overall, what is your on the PSU index? What is your Sir, view? PSU is doing really good. No doubt Mhm. about that. PSUs, if the Prime Minister is saying so, at least on the stock prices, it is reflecting. So no denying on that. So if let's say the PSU bank, if you want to see the index. Mhm. Yeah, let's go यस to दादा, बढ़िया है, बोलिए क्या खबर, आप कैसे हैं? PSU banks. You can see where is Bank Nifty and where is PSU bank, right? आनंद बना रहे हैं, Clearly see. बच्चे लोग गए वापस सब। सुनील जी प्लीज अपने आप को म्यूट पे डाल लीजिए। मैं कर देता हूँ सर, वो फोन पे है, मैं कर देता हूँ। अच्छा। सुनील जी, अरे mute। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि you can see like it's a really It's a broad double top almost. Yeah. double top तो है। Also you can see this is a very good rounding pattern. Rounding pattern. Yeah. And if you want to call this a cup, then probably a handle is in making. We can say that until unless this is like Chota handle, which is not meeting the थोड़ा ऐसे actual करके specific. थोड़ा ऐसे करके बना देगा अभी कुछ दिनों में, maybe I don't know. Just it definitely, if you compare private banks and best thing is ये ratio charts you can see PSU bank divided by CNX. पहले मैं एक strategy करता था which is called as money in the bank. Have you anyone heard of that? Money in the bank? No. No. Okay. I'll share my document on money in the bank होगा मेरे पास. Basically, Bank Nifty versus the components, right? Almost better deeper. You're sharing in the group.
I can't hear you, MK, unless anybody else can, and I'm the only one who can't hear you. Oh, sorry. I think this mic has an issue. Can you hear me now? Now I can hear Yeah, you. yeah, yeah. You know, almost for more than 2 minutes we didn't hear you. Oh, is it actually Since the this? time you pulled up this sheet, actually. Oh, so what I was saying is this this person is Mr. Pramod Ji. He got this blog optionsnext.com. I was a very avid follower of his blog for a very long time, more than 1 or 2 years. So this strategy, what I'm talking about, money in the bank, was founded by him or invented by him, kind of. And what this strategy is really was really about is we go we go bullish by selling puts in private banks, and we buy the bank Nifty index puts equivalent amount. So 3 and 3. Usually 3. यहाँ पे ICICI Bank is showing us 2, but we do 3 and 3 banks. So in a nutshell, Bank Nifty contains SBI also, and Bank Baroda, some of the PSU banks, right? So yeah, we are bearish on PSU banks, kind of, and selling puts on private banks. So basically, we are his thought process was that कि अभी के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ सालों तक तो पीएसयू चलते ही नहीं थे, करेक्ट? Okay. After, in the recent government, things have changed, but previously PSU, you take any PSU, NTPC or sub, Coal India, and every damn PSU was just beaten down. Now every damn PSU, PFC, and RECs of the world are on the top. मेरे उस शीट में आते हैं वो अल्फा चेजर और मोमेंटम वगैरह में. I can just flash it really quick. यहाँ पे you can see REC, PFC, they are on the top, right? These are PSUs after all. और भी मिल जाएंगे, BHEL भी है, और भी 2-4 मिल जाएंगे. So basically what I'm trying to say is we are bearish. He used to be bearish on Bank Nifty and bullish on private bank stock, and no adjustment done to this. So I have a document on around it if you want to really see and understand this, but I don't do this any longer. And I never used to do every month. He used to do it every month, and for a very good लंबा, मतलब बहुत लंबा किया था इन्होंने, 2 या 3 साल तक हर महीने करते थे, और हर रोज प्रॉफिट लॉस भी पोस्ट करते थे रियल ऑन हिज ब्लॉग. आई यूज्ड टू फॉलो, एंड अभी भी है क्या सर? अभी भी चल रहे क्या? अभी करते हैं कि नहीं पता नहीं, मैं खोल के देख लेता हूँ. अभी बहुत टाइम हो गया, मैंने खोला नहीं. इसके अलावा भी ये कॉल स्प्रेड्स और बहुत कुछ डालते रहते थे. इनका ब्लॉग ही बंद हो गया था कुछ टाइम तो बीच में, अभी नहीं शायद है ये. बट यू कैन इनके इनके ब्लॉग्स पे he is very active on Quora as well. Quora, अभी कोई Quora यूज नहीं करता है, बट मैं पहले बहुत पढ़ता था. तो इनके आप पढ़ सकते हो, प्रमोद कुमार, ये फाउंडर ऑफ ऑप्शन नेक्स्ट. ठीक है, यू कैन रीड. यहाँ पे मनी इन द बैंक के बारे में भी मिल जाएगा आपको, और मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी मैं शेयर कर दूंगा. बेसिकली क्या है कि इसमें पीएसयू बैंक्स में बियरिश व्यू रहता था. यूज्ड टू डू दिस मंथ ऑन मंथ एंड वाज मेकिंग गुड मनी. देन आई स्टॉप डूइंग दिस. मैं मंथ ऑन मंथ नहीं करता था. मेरे को थोड़ा सा जजमेंट रहता था कि ओके, दिस मंथ प्राइवेट बैंक्स, बैंक निफ्टी इज गोइंग टू टैंक, एंड प्राइवेट बैंक्स आर द वंस हु आर गोइंग टू टैंक इवन फर्दर. ओके, तो वो मैं नहीं करता था. वो मैं पूरा अपना रेशियो चार्ट से एनालिसिस करता था. For example, this is PSU bank by private bank, correct? And यहाँ पे you can see it has done a breakout, right? Kind of a breakout, right? So looking at this, you can really see कि अगर मैं वो strategy कर रहा होता अभी is August month, मेरा M2M loss में होता, right? So I used to do some analysis on this ratio chart and then make entries on a specific month only. And काफी टाइम तो बहुत अच्छा किया मैंने उसमें.
but then I stopped doing that, and yeah, my options, stock options में बहुत ज़्यादा बाहर आ गया. There was a case in one of the month, one of the banking stock, I think Kotak or someone, tanked real big, बहुत ज़्यादा गिर गया. Yes. तो मैंने सोचा कि ओके इतना गिर गया है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, उस पुट के अगेंस्ट डिलीवरी ले लेता हूँ और अगले महीने कोटक बैंक की जगह मैं अब से एक्सिस बैंक पे शुरू कर देता हूँ, ऐसा मैंने सोचा. राइट, क्रिएटिव हो रहा था मैं. एंड देन उसके बाद वो स्टॉक इतना गिरा, इतना गिरता चला गया कि मैं कॉल बेच बेच के परेशान हो गया कि पेनी कॉल बेच रहा हूँ मैं, क्योंकि राइट वो कॉस्ट कॉस्ट कवरेज भी तो होनी चाहिए ना, कॉस्ट बेसिस बनता है. बिल्कुल बिल्कुल वो Then आ जाती है सिचुएशन. then I realized this is not a right approach. Yeah, I mean, I made my set of mistakes. That's how I I learned it hard way. Now the case is reversed. Like PSU banks are performing, and Yeah, private banks are not performing. So can we make it reverse? you can do it, but you are. I mean, you're just taking a judgment, right? Uh, you have to. देखिए सर, आपको कुछ भी करना है, आप रेशो चार्ट एनालिसिस जरूर करिएगा. मैं ये बोलूंगा बस कि अभी यहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है, व्हाट इज द नेक्स्ट कैंडल, नोबडी नोज, राइट. सो आर एनालिसिस इज ओनली गोइंग टू सेव अस. यहाँ पे देखिए क्लियरली कितना अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिख रहा है. तो ब्रेकआउट पीएसयू भी है और हमने वो PSU का देखे तो उसमें कप एंड हैंडल भी है. या अब सी निफ्टी, अभी गोइंग बैक टू दैट थिंग कि मोदी जी का स्पीच था कि पीएसयू पे दांव लगा दो वाला, राइट. इट वेंट वायरल एंड but it is reflecting. See, from after his speech, what happens, even you and I don't know. कि कल कल को गवर्नमेंट के ही वो लोग हैं जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और हम लोग फंस गए, राइट. एनीथिंग कैन हैपन. सो दैट्स व्हाई द ट्रू रिफ्लेक्शन इज द प्राइस. वो बोले भाव भगवान वही बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है. अभी तक तो जो वो बोले वो अभी तक तो सही था, क्योंकि इफ यू लुक एंड चेक द हिस्ट्री ऑफ पीएसयू स्टॉक्स, नॉट जस्ट निफ्टी में 25-30% फाइनेंशियल्स हैं. तो इफ यू लुक एट दिस चार्ट, इट इज क्लियरली शोइंग कि हाँ, what he has said is right. If we look beyond financials, defense stocks ने बहुत अच्छा किया है, HAL and some other stocks. और REC PFC तो टॉप पे ही है. अभी REC का चार्ट लगा हुआ था पहले, वो इसका तो कोई लग ही नहीं रहा है कि there is a roof to it, right. And these are stocks which pays very good dividend as well. Yeah. तो ये देखिए यहाँ पे हर 4 महीने में डिविडेंड आ रहा है, 5 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 3 Yeah, रुपए. even the other smaller ones, SJVN and NHPC, I mean, Yes, all have been fabulous. correct. But what will happen from here is what becomes a public fact then tends to lose its value. What remains unknown has some value. I mean, I may be wrong, but that's how Yeah, I. same thing. Buy on rumor, sell on news kind of Yeah, scenario. yeah. There's another PSU. The mother of all PSU is LIC India, right? उसका आईपीओ है था, उसके साथ क्या हुआ? अभी तो थोड़ा रिकवर हो रहा है वो, right? But see, after the IPO and giving discount to women and everything, coming at 900 rupees, going till 525. This is the mother of all. PSU, right? The biggest DII. I mean, the only DII rather. करेक्ट. किसी को भी बचाना है तो इसी से बचवा दे. So PSU, not all PSUs are good. Not everything that shines is gold, they say, right? So, okay. वो इतना प्रॉफिट अनाउंस करने के बाद भी वो हिला नहीं है. Yeah, right. But it's a long term play. If you have, it'll probably do good. Even I have it. I got it in my mom's. Yeah, उसमें फीमेल में कुछ है 10-20-30 रुपीज का कुछ डिस्काउंट था, आईपीओ में मेरे को मिला था. पड़ा हुआ है, पता नहीं नेक्स्ट जनरेशन बेचेगी शायद अभी इसको.
What else? Anything else on any stock or anything you want to discuss? I think most of the people must have already dropped. Yeah, 11 people only there. हेलो एमके सर, मैंने आपको बोला था ना, वो एक्चुअली प्रोटेक्टेड फाइल करके आ रहा है कॉन्टेक्ट। आपको मैंने डीएम भी कर दिया है दोनों स्क्रीनशॉट्स। कहाँ पे आ रहा है सर प्रोटेक्टेड? हाँ, मैं डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, खाली कॉपी एंड कमेंट का ऑप्शन आता है। एक मिनट, प्रशांत जी बोल रहे हैं ना? हेलो, हाँ, क्या प्रशांत जी आवाज? बोल रहे हैं। हाँ, जब मैं डिलीट कर रहा हूँ ना सिलेक्ट करके, तो खाली कॉपी एंड कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये सब पूरा आपने बोला था ना सिलेक्ट कीजिए करके। एक मिनट, ये यहाँ पे ऊपर देख रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें सर ये वाला सिलेक्ट मत करिए जहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है ना। ओके, कौन सा खाली करना है? ये वाले मैं कलर कर देता हूँ आपको। उनको सिलेक्ट मत करिए आप, ये मत ओके, करिए। हाँ। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, ये मत करिए। ये मत करिए। बराबर। ओके, हाँ। बाकी का करके देखिए अभी। हाँ, मैं देखता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। फॉर्मूलास नहीं डिलीट करने देगा आपको। हाँ, वही इसके अलावा ये खाली इतना करना है, मैं देखता हूँ, एक मिनट। मोहित जी, हाँ सर। डिलीट सेल्स कर दो ना। Thanks a lot. Thanks a lot. ओके, थैंक यू, Yeah, bye. बाय बाय। प्रशांत को आ गया? Okay. You are trying to edit a protected cell or object. Please contact the spreadsheet owner to remove protection if you need. कौन सा एक एक कॉलम किया, एक एक कॉलम करना पड़ेगा शायद, वो एक एक कॉलम किया तो आ जाता है। आप प्रशांत जी कौन सा सेल डिलीट कर रहे हैं अभी? या ऊपर लिख के आ रहा होगा सेल नंबर। हेलो, ड्रॉप कर गए क्या? है। हेलो हेलो प्रशांत जी। हाँ, बोलिए बोलिए। आप कौन सा, क्या चीज, मेरे को सेल नंबर बताइए, क्या डिलीट कर रहे हैं आप? एक मिनट ना आपको। हाँ हाँ, मैं M&M से क्वांटिटी का कॉलम है ना, उतना ही किया है मैंने। एक बार सिलेक्ट करिए, मेरे को आपका सिलेक्शन दिख नहीं रहा है अभी। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, M&M सिलेक्शन नहीं दिख रहा है। M&M टू BDL तक मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके। और बाद में एंट्री और क्वांटिटी, वो कॉलम में खाली उतना ही सिलेक्ट किया है। इन्वेस्टेड जो येलो किया है वो सिलेक्ट नहीं किया है। हाँ, डिलीट दबाइए। डिलीट रोज 35 to 48 करूं? रो में डिलीट करिए, बस ये ऐसा सिलेक्ट करके डिलीट करिए। लेकिन खाली उसमें क्या आ रहा है सर? डिलीट रोज 35 to 48, डिलीट कॉलम H to J और डिलीट सेल्स। आपका लॉक तो नहीं है सर, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। पता नहीं यही वाले लॉक। नहीं, आप वो पर्टिकुलर सेल को ही कीजिए, आप डिलीट सेल्स कीजिए तो। एक मिनट, मैंने जरा रिफ्रेश कर लिया, एक मिनट देख लेता हूँ वापस एक बार। एक ये तो मैं हटा देता हूँ, आप सब कुछ हटा देता हूँ मैं, फिर आप थोड़ा शीट का फिर ध्यान रखना बस, क्योंकि आपको कॉपी दिया है मैंने, सबको सेम शीट दिया है। बाकी का हो रहा है तो आपका भी होना चाहिए। अभी डिलीट सेल्स बोल रहे हैं ना, डिलीट सेल्स एंड शिफ्ट लेफ्ट, डिलीट सेल एंड शिफ्ट अप। सर ऐसे सिलेक्ट करिए और डिलीट करिए, ऐसे। Press the delete button. Press the delete button. एक मिनट ना, मैं इसमें जा रहा हूँ, डिलीट बटन। राइट क्लिक करके आप प्रेस करें। Yeah. हाँ, हो गया। Inke, डिलीट बटन I से got हो to गया। go, so I'll Right take click leave. करके हो रहा था। Thank you very much. Thank you. ओके।
थैंक यू सर। थैंक यू एमके जी। हो गया थैंक ओके, यू। हाँ हो जाएगा प्रशांत जी, बाकी के भी हो जाएंगे। जहाँ पे हो ये गया थैंक जहाँ पे भी यू। फॉर्मूला है ना, आप ऐसे क्लिक करेंगे ओके ना, ओके बस वो फॉर्मूला डिलीट नहीं होंगे। ओके 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 यस थैंक यू। ठीक है, ओके, ओके ओके थैंक्स एवरीवन, बाय बाय।